happy. So today we are going to begin with the lesson number 11 of your class 4 English, that is the little girl with the long name. So let's begin with this lesson. Ratna Bala imprinter Mukherjee Singh Ahluwalia was sitting sadly in a corner of the beautiful park. वो कहाँ बैठी थी? कोने में बैठी थी सुंदर से पार्क के. She was sweet little girl only 7 years old. वो क्या थी? एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी. और कितने साल की थी वो? 7 साल की थी. Her beautiful face was covered with dark black curly hair. उसके beautiful face किससे covered था? Dark black curly hair से covered था. Even then the sadness on her face could be seen easily. उसके face पे sadness आराम से दिख पा रही थी कि वो sad है. It was a pleasant winter Sunday afternoon. वो क्या था? एक pleasant winter Sunday afternoon था. Sunday का afternoon था सर्दियों का. The sun was shining brightly, spreading its warmth all around. तो sun बहुत अच्छे से चमक रहा था और अपनी गर्माहट सारी तरफ फैला रहा था. Many people were present in the park, basking in the soft warm sunshine. Bathing in the soft warm sunshine. तो सब लोग पार्क में थे, बहुत सारे लोग. तो वो क्या कर रहे थे? मतलब सॉफ्ट वार्म सनशाइन को ले रहे थे. It was a large lovely park with soft green grass. वो बहुत ज्यादा बड़ा lovely park था, बहुत अच्छा park था. उसमें soft green grass थी. Beautiful flowers were tossing their heads in the soft breeze. Beautiful flowers जो है इधर उधर हिल रहे थे. किसमें? Soft breeze में, गर्म हवा में. The trees were covered with pink delicate flowers. Trees किससे covered थे? Pink delicate flowers से covered थे. Some birds were sitting on the trees. कुछ birds कहाँ बैठी थी? Trees पे बैठी हुई थी. Chirping merrily, जो chirp कर रही थी. Children were busy playing all kind of games. Children busy थे हर तरीके का गेम खेलने में. Some were playing cricket. कुछ cricket खेल रहे थे. Some were playing volleyball. कुछ volleyball खेल रहे थे. Some were skipping. Some were playing hide and seek, and some were just running about aimlessly. कुछ hide and seek खेल रहे थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे बिना किसी वजह. Everyone was having fun except the little girl. हर कोई मस्ती कर रहा था. किसके बिना? बस एक little girl, छोटी सी बच्ची नहीं कर रही थी. What was the reason of her sadness? Actually, it was her name that made her unhappy. इसका रीजन क्या था sadness का? ये था कि उसका जो नाम है वो उसको बिल्कुल भी खुश नहीं रख पा रहा था. She was not at all happy with the big name she said. वो उसने बोला मैं बिल्कुल भी अपने खुद बड़े से नाम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. रत्ना बाला imprinter मुखर्जी सिंह एलूवालिया was an awkward name. ये क्या? What an awkward name. उसने बोला कितना अजीब सा नाम है. All her friends had such beautiful names. उसके सारे फ्रेंड्स के बहुत सारे सुंदर सुंदर से नाम है. टीना, मिनी, किटी, प्रिया and the like. हर किसी मतलब बहुत सारे नाम है. She had often told her parents to change her name and give her a sweet short name. उसने अपने पेरेंट्स से बहुत बार बोला कि मेरा नेम चेंज कर दो, एक छोटा सा नाम मुझे दे दो. But they said it was their family tradition to have big names. But उन्होंने बोला कि उनके फैमिली का ट्रेडिशन है बड़ा सा नाम रखने का. So the little girl was sad in spite of the pleasant surroundings around her. जो छोटी सी बच्ची थी वो sad थी in spite of pleasant surroundings जो उसके आसपास था. She had been thinking what she could do to have short sweet names like Prince. तो वो मतलब सोच रही थी वो क्या कर सकती है छोटे से स्वीट नेम रखने के लिए अपने फ्रेंड्स की तरह. Why can't I have a nice short and sweet name like everybody else? क्यों मैं अपना छोटा सा अच्छे से नाम नहीं रख सकती औरों की तरह? She said to herself, maybe I could leave out some of my names. उसने अपने आप से बोला क्या मैं अपने खुद से कुछ नाम रख सकती हूँ? Now she could not leave out Ahluwalia. वो अपना Ahluwalia भी नहीं छोड़ सकती. Because this was her father's family name. क्योंकि उसके father का family name है, surname है. It was from Punjab. He was from Punjab. वो पंजाब से थे. He was sick. वो sick थे. So she could not leave out Singh. वो Singh भी नहीं छोड़ सकती. She could not leave out Mukherjee either. वो Mukherjee भी नहीं छोड़ सकती. Her mother was a Bengali. उसकी mother कौन थी? Bengali थी. Mukherjee was her mother's family name. Mukherjee उसकी mother की family का name है. Imprinter was her दादी's name. Imprinter क्या था? उसकी दादी की family का name है. So she could not leave that out. तो उसको भी नहीं छोड़ सकती. Neither could she leave out Ratna Bala because that was Nani's name. वो रत्ना बाला भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो उसकी नानी का नेम था. Because that was Nani's name. Dadi ji has been a famous painter of her age and Nani ji has been the first woman pilot of the country. दादी जी कौन थी? फर्स्ट फेमस पेंटर थी अपनी एज की और नानी जी फर्स्ट वुमेन पायलट थी कंट्री की. सो शी
had to use her full name Ratnabala Imprinter Mukherjee Singh Ahluwalia. तो उसको अपना पूरा ही नेम यूज करना पड़ेगा, जैसे हो गया रत्नबाला इम्प्रिंटर मुखर्जी अहलूवालिया. What can I do? She wondered aloud. मैं क्या कर सकती हूँ, उसने सोचा. A black cow was pickpecking at the grass near her. एक black cow पैक कर रही थी उसके, black crow sorry. A black crow was pecking at the grass near her. एक black crow पैक कर रहा था वहाँ पे उसके ग्रास के पास वहीं पे. He was very wise crow. वो बहुत अच्छा crow था. He was so wise and clever that he could read the girl's thought. वो इतना तेज था और इतना अच्छा था कि वो गर्ल्स की सोच को, मतलब थॉट्स को पहचान गया था, समझ गया था. It's not a big problem, said the crow in its harsh, rough voice. crow ने बोला ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. उसने अपनी गंदी, मतलब हार्श सी, रफ सी आवाज में बोला. Maybe I can help you out. मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. The girl was surprised. Girl surprised थी. Oh, you can talk. क्या तुम बात कर सकते हो? You must be really very clever. तुम पक्का बहुत तेज होगे. Please help me, she said. उसने बोला प्लीज मेरी मदद करो. Wise crow hopped onto the girl's knee. वो कहाँ गया? गर्ल्स की नी पे चला गया. He took at the girl with his shiny eyes and whispered, listen to me carefully. उसने गर्ल की तरफ देखा अपनी shiny eyes से. उसने बोला सुनो मेरी बात को ध्यान से. The little girl with lovely curls hair nodded her head and opened her eyes wide. उसने अपना head nod करा और अपनी eyes को बड़ा बड़ा open कर दिया. Go home and take a piece of paper and a pencil. घर जाओ, एक piece of paper लो और एक pencil लो. Write down the first letter of your name. एक first letter लिख दो अपने name का. Then you will have a new name. फिर तुम पे एक नया नाम होगा. A short and sweet name, just what you have longed for. So with this, the wise crow flapped his wing and flew away. सब वो अपनी wings flap करके भाग उड़ गया. Cawing loudly, वो caw करता हुआ चला गया तेजी से. Ratnabala Imprinter Mukherjee Singh Ahluwalia was excited. वो बहुत ज़्यादा excited थी. She ran home at once, took a notebook and a pencil and wrote the first letter of all her names. उसने first letter लिख लिया अपने सारे names के. Ratnabala Imprinter Mukherjee Singh Ahluwalia looked at her new name. उसने अपना new name को देखा. As first she smiled. उसने smile करा. And she laughed and clapped her hands and with joy. उसने अपने hands clap करे खुशी से. She had a new name. अब उसका एक new name था. It was really short and sweet. वो एकदम short और sweet था. It was as sweet as any of her friends' name. वो इतना sweet था उसके किसी और friend से ज़्यादा. Can you guess what her new name was? Just try and you will get right it here. अब क्या आप guess कर सकते हो उसका new name क्या होगा? Let's try. R-I-M-S-A. Rimsa. Rimsa was her new name. So you can write here R-I-M-S-A. Rimsa was her new name. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.